Hey guys, today I want to tell the phrases or I want to tell you about the phrases that you should never say to your friends, to your colleagues, to your classmates at work or at the university. And I'll give better phrases that you can use instead. So let's get started. That's a bad idea. By telling this, you can make other person feel uncomfortable and you risk to offend them. Instead of saying that's a bad idea, you should say I'm not sure that's a good idea. I'm not sure that's a good idea. Your work is awful. Your work is awful. Instead of saying your work is awful, you should say your work is not really up to standard. Your work is not really up to standards. Even if you don't like the work, of course, you don't want to hurt anyone. And you should be careful when you express your opinion. मेरा कहने का मतलब ये है कि हम किसी को ये ना कहकर कहें कि योर वर्क इज़ ऑफुल। उसकी जगह पर हम कुछ और कह सकते हैं कि योर वर्क इज़ नॉट अप टू स्टैंडर्ड, मतलब कि तुम्हारा वर्क वैसा नहीं है जैसा हमें चाहिए। ऑफुल वर्ड थोड़ा सा रूड हो जाता है तो सामने वाले सुनने वाले को भी बुरा लगता है, and this is a kind of rude word, so we shouldn't use this at formal places. The next phrase you should never use: this report isn't good. This report isn't good. Instead of saying this report isn't good, you should say I'm not satisfied with this report. I'm not satisfied with this report. The second phrase is more polite and professional that you can use. अगर हम डायरेक्टली कहेंगे दिस रिपोर्ट इज़न्ट गुड तो ऑब्वियसली सामने वाले को बुरा लग सकता है, तो इसकी जगह पर हम कह सकते हैं ना कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस रिपोर्ट, कि मैं इस रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। सेटिस्फाइड वर्ड क्या है? एक अच्छा वर्ड है जो सामने वाले को, सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा। I hate this color. I hate this color. Instead of saying I hate this color, you should say I'm not too fond of this color. मतलब कि मुझे इस कलर का इतना ज़्यादा शौक नहीं है जहाँ मुझे, बट अगर हम डायरेक्टली I hate this color बोलेंगे तो it wouldn't be good, बोलने में भी और सुनने में भी। The verb hate like sounds like very rude and informal. हमारी अगली फ्रेज है, द नेक्स्ट फ्रेज इज कम हियर. Instead of saying come here, you should say could you come here? Could you please come here? Even though you feel very close to your group mates, to your colleagues, it's better to choose polite and appropriate phrase that is could you please come here or कम हियर तो होता है कि जैसे हम अपने घर वालों को, मतलब अपनी फैमिली के मेंबर्स को सीधा ही बोलते हैं कि कम हियर। बट अगर हमें किसी फॉर्मल प्लेस पे जाके बोलना है, लाइक हमें अपने ऑफिस में बोलना है या यूनिवर्सिटी में बोलना है या किसी ऐसी प्लेस पर बोलना है जहाँ पर कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे नेचर के हैं और जिन्हें हम पहली बार मिल रहे हैं, तो उनके साथ पोलाइटली तो बात करना ज़रूरी है ना। तो इसलिए कहें कुड यू प्लीज़ कम, एंड सामने वाले को भी सुनने में अच्छा लगेगा। Another phrase that you shouldn't use at your university or at your office is leave me alone. Leave me alone. Instead of saying leave me alone, you should say sorry, I'm a bit busy right now. मतलब कि आप कह सकते हैं कि सॉरी, अब मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, मैं जो भी काम है मैं बाद में करूँगा, अभी के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अपना काम करना है। The next phrase, it's hot, open the window. Instead of saying it's hot, open the window, you should say do you mind if I open the window?
Do you mind if I open the window? Do you mind हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी को पोलाइट वे में बोलते हैं, किसी को रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं, तो तब हम ये यूज़ करते हैं. Again, it's polite way to do something to someone. And अपनी अगली फ्रेज़ है tell me when the meeting starts. Tell me when the meeting starts. Instead of saying tell me when the meeting starts, you should say let me know when the meeting starts. Let me know when the meeting starts. The phrase tell me is a kind of imperative and it's also kind of instruction. But in the office or at the university, we should avoid this phrase. It might sound offensive, so we shouldn't use this at our office or at our university. Guys, I have told you the phrases that you should never use at your office, at your university, or to your co-workers and group mates. I hope this video was useful for you. And thank you for watching, guys. If you like this lesson, please hit the like button and subscribe to my channel for learning more. I'll see you next time. Bye.